Hello guys, welcome to part 2 of old method. So here we will read about mother tincture preparation. For mother tincture we are having 4 classes, right? Mother tincture के लिए हम लोगों के पास 4 classes होते हैं, class 1, class 2, class 3 and class 4. For class 1, what kind of drug substances we are taking? We are taking most juicy plants. For class 2 we are taking medium juicy plants. For class 3 we are taking least juicy plant. For class 4 we are taking dried vegetable and animal substances. Okay, so now we will see class 1. So in class 1 the tincture is prepared with equal parts by weight of drug substances and alcohol. मतलब हम यहाँ पे we are taking alcohol 1 part and drug substance 1 part. हम क्या कर रहे हैं? We are taking 1 part of drug substances and 1 part of alcohol. Okay, fundamental rule in materia medica pura is described under belladonna. materia medica pura के अंदर फंडामेंटल रूल जो है वो बेलाडोना के अंदर डिस्क्राइब किया गया है फॉर क्लास 1. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल टू जूसी बट नॉट विसिड मटेरियल्स. मतलब एंड नॉट कंटेनिंग रेजिन्स, टर्पिन्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स. ये सब जूसी मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल होता है. क्लास 1 में वी आर टेकिंग ओनली जूसी प्लांट्स. ओके, सो अब हम देखेंगे हाउ वी विल प्रिपेयर मदर टिंचर. मदर टिंचर हम कैसे बनाएंगे. सो मदर टिंचर बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होती है. सो वी विल सी द रिक्वायरमेंट्स. इन रिक्वायरमेंट्स इंग्रेडिएंट्स आर, फर्स्ट थिंग इज ड्रग सब्सटेंसेस. जो मेडिसिन बनाना है उसके लिए हमको उसका क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस चाहिए इन फ्रेश फॉर्म. ओके, एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग अल्कोहल. ठीक है, सेकेंड हो गया यूटेंसिल्स एंड apparatus. यूटेंसिल्स एंड apparatus मतलब व्हाट सब्सटेंसेस वी आर यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ दिस मदर टिंचर. ओके, क्या क्या चाहिए? वुडन चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ. क्यों चाहिए? फॉर कटिंग द सब्सटेंसेस. पोर्सलिन मोटर एंड पेसल. क्यों चाहिए? पल्प बनाने के लिए, टू मेकिंग पल्प. हॉर्न मेड स्पैचुला. लिनन क्लॉथ, न्यू एंड स्टेरिलाइज्ड. स्टेरिलाइज्ड क्यों बोला गया है? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग ड्रग सब्सटेंसेस, सो इट्स टू शुड बी स्टेरिलाइज्ड. अगर स्टेरिलाइज्ड नहीं हुआ तो मेडिसिन बनाने का कोई मतलब नहीं है. देर इज़ नो यूज ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स if you are not adopting sterilization methods. A clean small beaker, glass stoppered file. क्यों चाहिए हमको? दवाई रखने के लिए वेल स्टॉपर्ड होना चाहिए ताकि इवापोरेशन ना हो, कॉन्टामिनेशन ना हो. ग्लास फॉनल विथ स्टैंड. ओके, फिल्टर पेपर चाहिए. अनदर क्लीन फाइल विथ अ न्यू नॉन पोरस वेलवेट कॉर्क. बैलेंस विथ वेट बॉक्स. क्यों चाहिए? वेट करने के लिए कि कितना हम सब्सटेंस बनाएंगे, कितना हम उसमें ड्रग सब्सटेंस डालेंगे, कितना अल्कोहल डालेंगे, ये सबको वे करने के लिए. पेन, पेपर, गम एंड सीजर. क्यों चाहिए? मेडिसिन बन गया, अभी उसको लेवलिंग करना भी ज़रूरी है. सी, मेडिसिन बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेकिंग मेडिसिन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेबलिंग इज इम्पॉर्टेंट. अगर उस पर नहीं लिखोगे, इफ यू विल नॉट राइट व्हाट इज द मेडिसिन, देन इट इज चांसेस ऑफ मिंगलिंग इज मोर. सो यू नीड टू लेबल द ड्रग प्रॉपरली. नाउ वी विल सी द प्रोसीजर. ओके, सो फॉर क्लास 1 what we require? 1 part of the drug substances and 1 part of the alcohol. We are having this much of things and the substances above that I told. How we will prepare? First we will take the fresh plants. Either it can be root, it can be bark, it can be leaves, and we have to cut it into small pieces. क्या करेंगे? उसको छोटा छोटा जो है पीसेस में कट करेंगे. किससे कट करेंगे? नाइफ से. वो नाइफ कैसा होगा? वेल पॉलिश्ड और स्टील नाइफ होना चाहिए. वाई वी विल नॉट यूज आयरन? Because see, we are using most juicy plants, we are cutting, it will come in contact with water के contact में आ सकता है, so rust होने का chances हो सकता है. It is not, chances of rusting should be more.
by using this iron knife. So we will use steel polished knife free from rust on a cleaning chopping board and pounded to a pulp with mortar and pestle. मतलब we will take the drug, we will cut into small pieces with a steel knife. Then after chopping, we will pulp it in a mortar pestle. Okay, the pulp is now enclosed in a new linen cloth and the juice is expressed by means of a press or by wringing the cloth. क्या करेंगे? See, by the mortar and pestle we prepared the pulp. After preparing the pulp, we will take the pulp in a linen cloth and we will squeeze that juice. Properly we will squeeze that juice either by linen cloth or by a press, tincture press. Okay, then by this process क्या हुआ कि हमें कपड़ा लिए, उसमें ड्रग सब्सटेंसेस रखे और उसका जो जूस है हमने निकाल लिया. वो जो जूस अभी आएगा, द एक्सप्रेस्ड जूस शुड बी वेड. अब उनको क्या करेंगे? वे करेंगे कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द जूस एंड केप्ट इन ए ग्लास जार. उसको हम क्या करेंगे? नाउ वी विल कीप इट इन अ ग्लास जार. उसको लेकर हम क्या करेंगे? एक ग्लास जार में रखेंगे. अभी जो जूस आया इन क्लास 1, व्हाट वी विल टेक? इक्वल पार्ट्स ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड अल्कोहल. मतलब 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंसेस एंड 1 पार्ट अल्कोहल. सो जितना भी ड्रग सब्सटेंस हमने निकाला, सेम रेशियो में वी विल ऐड अल्कोहल. 1:1. इक्वल क्वांटिटी बाई वेट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज एडेड टू इट. उस ग्लास जार में क्या करेंगे हम? सेम क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल वी विल ऐड. द मिक्सचर इज टेकन विगोरसली फॉर सम टाइम. आफ्टर मिक्सिंग अल्कोहल, what we will do? We will shake it vigorously. Why we will shake vigorously? To mix it properly. Okay, and allow to stand for 8 days in a cool, dry, dark place. Okay, क्या करेंगे? Now we will keep that mixture in a cool, dry, dark place, free from contamination for how many days? For 8 days. Okay, then it is pounded, it is poured in a clean phial provided with the best quality of new non-porous velvet cork. क्या करेंगे? आफ्टर दैट वी विल कीप दैट इन अ वेल नोन नॉन पोरस वेलवेट कॉर्क वाला जो बॉटल होगा, फाइल होगा, उसमें वी विल पोर दैट मिक्सचर एंड बाय दिस वे वी कैन गेट आवर क्लास 1 मदर टिंचर्स. ओके, अभी up to this procedures, now we will calculate the drug power. I told you know what is the importance of drug power in the introductory part. So अगर आपने नहीं देखा है तो once go and check that part. Now I will tell how to calculate the drug power of class 1. How to calculate the drug power? See, drug substance we are taken is 1 ml suppose, and the strong vehicle we are taking, strong vehicle मतलब strong alcohol we are taking is 1 ml. Again, why 1 ml 1 ml? Because drug substance is 1 part and strong alcohol is also 1 part. So 1 ml we took drug substance and 1 ml we took strong alcohol. So what is the solution quantity? It is of 2 ml. And what is the drug power formula? Drug power is amount of drug substances present in a solution. So amount of drug substance is 1 ml and amount of total solution is 2 ml. Okay, means 1/2 is the drug power of the class 1. Now we will see the potentization part. Okay, for potentization how many scales are there? See, now we will study about centesimal scale and decimal scale. I'm saying for this purpose, but in detail we will read about the potentization scales in details, okay, afterwards. Now we are having 2 scales. One is centesimal scale, one is decimal scale. First we will prepare according to the centesimal scale. What I told, drug power, why drug power is important? To make the first potency. Okay, so for class 1 the drug power is 1/2. Okay, so we will take 2 parts of the for centesimal scale. What is the drug strength? It is 1/100, right?
So 1 by 100 is for centesimal and 1 by 10 is for decimal. So for centesimal it is about 100 parts. Okay, so we will take 2 parts of drug substances and 98 parts of alcohol. Okay, we'll take 2 parts of the drug substances and 98 parts of the dilute alcohol. By this we can prepare and will give 10 downward strokes. By this we will prepare the first potency of class 1 in centesimal scale. Again I am repeating, first potency of class 1 in centesimal scale. For centesimal scale we are taking 2:98. Why we are taking 2 parts? Because in class 1 the drug power is 1 by 2. So we are taking 2 parts of the drug substances. But for decimal scale, what we will take? 2 parts of the drug substances and 8 parts of the dilute alcohol. Understood? For decimal scale in class 1, we will take 2 parts of the drug substances as the drug power is 1 by 2 and 8 parts of the dilute alcohol. It is the first potency. And for the further potency, we will take 1:99 in centesimal scale and 1:9 in decimal scale. Okay. Now you understood what is the importance of the drug power for making only first potency. For making second potency, we will take 1 part of the 1x or 1 part of the 1c, means first part of the centesimal or decimal scale potency and either 9 parts of the dilute alcohol in decimal scale or 99 parts of the dilute alcohol in centesimal scale. By this we will prepare 2x or 2c potency respectively. Now you understood the whole procedure, how we will prepare from mother tincture to potency. Now I will tell some examples under class 1. For a whole plant we are taking Aconitum napellus, belladonna, bellispur, chamomilla, drosera, dulcamara, hyoscyamus, lilium tig, millifolium, plantago, solanum nigrum, tarascum, Attica urens and verbascum. For roots what we are taking? Cicuta virosa, Bryonia alba, Rumex, cyclamen, like that. For stem with leaves we are taking Clematis erecta. For bulb we are taking Colchicum autumnale. For leaves we are taking Calendula, Cephalandra, Digitalis, Sambucus nigra, like that. For flower what we are taking? Cannabis sativa. For seed we are taking Avena sativa. For bark we are taking granatum. And most importantly, what I told before, mother tincture is prepared only from animal and vegetable kingdom, correct? But here in class 1 we are preparing causticum, and causticum is a mineral and chemical source. So external can ask like this, ki which drug substances that are belonging to mineral or chemical sources but prepared under class 1, that is causticum. Most importantly, remember this. Okay, for this video we learned class 1 properly, that what are the things we are requiring, what is the ratio, what is the drug power, how we will calculate, what is the potentization scales, how we will prepare the first potency and successive potencies, and example. If any doubt, ask in the comment box. Till then, keep learning. Thank you.